आज हम लोग आए हैं आइकिया शॉपिंग करने और साथ में सोच रहे हैं कि अभी लंच टाइम हो गया है तो कुछ खा भी लेते हैं. दे हैव अ फैंटास्टिक food counter here. You can get a lot of stuff. So let's go and explore that. Alright, तो ट्राई करते हैं हम लोग पहले अपने चिकन मीट बॉल से. Try it out. Here, cola for you, sugar free. Like that's gonna do so much. Thank you, love. ट्राई करते हैं मीट बॉल से. बहुत ही बढ़िया है मीट बॉल से. और जो ग्रेवी है इसकी, ग्रेवी इज रियली नाइस. And they serve it with some veggies and mash. अभी थोड़ा सा मैश ट्राई करते हैं. वेजीज में इनके गाजर है, स्वीट कॉर्न है और मटर है. But I'll tell you guys quickly. My salmon fillet. It comes with veggies, dill sauce, and vegetables, and a fillet of salmon just steamed. That's it. There's nothing more to it. And I poured the citrus dill sauce on top, and it's very simple, very yummy, just very good. अभी इनके दूसरा आइटम भी ट्राई करते हैं. इनके नगेट्स ट्राई करते हैं इससे पहले कि सब खत्म हो जाए. ट्राई दिस. मैकडोनल्ड से कंपेयर करते हैं क्योंकि दैट्स द क्लोजेस्ट.
हम्म। मैकडोनल्ड से बहुत बेटर है यार, ये मैकडोनल्ड्स वाले नगेट्स तो डेफिनेटली बेटर है। आई थिंक आइकिया में शॉपिंग से ज़्यादा लोग इधर फूड काउंटर पे बिजी हैं। No. हम लोग ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं। पायल को जो है एक ड्रेसर लेना था, सो आई अकम्पनीड हर टू बाय द ड्रेसर, सिलेक्ट द ड्रेसर, एंड मैंने बोला साथ साथ में इनका एक फूड एरिया का भी कवरेज हो जाए कि कैसा है कैसा नहीं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी फैंसी नहीं है, बट बेसिक फूड डन राइट की पॉलिसी इस पर आएगी। एकदम हाइजीनिक है, सामने आपके बना रहे हैं, फैसिलिटीज एकदम नीट एंड क्लीन है, जो सर्व कर रहे हैं वो अपना वेल सैनिटाइज्ड इक्विपमेंट्स और ग्लव्स में कर रहे हैं। बेसिकली सिंपल बेसिक और हाइजीनिक खाना आपको आइकिया में एक्सपीरियंस करने मिलेगा, एंड रीजनेबल एक तरफ से। मैं ज़रा सैमन भी एक बाइट टेस्ट कर लेता हूँ। हम्म, सैमन क्वालिटी इज नाइस। नॉर्वेजियन सैमन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ऑलराइट, तो दाल जो है चावल के बिना ज़्यादा बेटर लग रही है इनकी। इट इज़ नॉट एज ब्लैंड जितना चावल क्या टेस्ट कर रही थी। So, today you see me eat here at IKEA. This is not the first time we're eating here. We're almost done with whatever we ordered. We skipped on the sweet dish because they have cheesecake, New York style, and gulab jamun and rasgulla. Very basic, and to be honest, they're not the greatest. So you can skip them if you are watching your weight. Other than that, everything was pretty okay. If you are looking for a lot of flavors and a lot of masala, this is not the place. But again, we had to shop, and shopping makes you really hungry. That's a cardio. And so you have to eat. Basically, that's the whole concept of IKEA. And my salmon fillet was really, really good. It's just steamed salmon with vegetables and veggies, and that's basically it. His meatballs is one of the only things you should really try if you come to IKEA. That dish is great. Dal makhni is amazing. I truly, honestly love dal makhni. I don't like the rice, but just plain dal makhni tastes super. The croissants and the breads and stuff were pretty basic. It was okay. Coffee. I got espresso. This is really nice. Chicken nuggets were bomb. They were right like fried then and there, fresh. So it was really yummy. Anything fried is too good anyway. That's it. That's all the food, and it was amazing. See ya. ऑलराइट, अब आपने पायल का रिव्यू सुन लिया, अब मैं आपको बॉम्बे बुक्कड स्टाइल में अपना रिव्यू देना चाहूँगा। स्टार्ट विद द मीट बॉल्स। आई थिंक मीट बॉल्स कॉस्टेड 280. 250 rupees, the meatballs, and आई थिंक इज द मोस्ट स्टैंड आउट डिश, सबसे सबसे बढ़िया डिश पूरे मेन्यू में जो इनकी है। दोज आर द आइकिया मीट बॉल्स, और इनका एक मीट बॉल का वर्जन आता है विच कम्स इन करी वर्जन एज वेल, और जो करी वर्जन वाला आता है वो भी ट्राई करने जैसा ही है, बिकॉज द करीज आर वेरी नाइस। आई हैव ट्राइड देयर करीज बिफोर, एंड स्पाइसी होते हैं और टेस्ट में बहुत बढ़िया होते हैं।
और दूसरा फिर हमने ट्राई किया था सैमन. Salmon fillet was the more expensive one. That was for 700 rupees. And I think जहाँ तक मुझे लगता है पायल को भी अच्छा लगा वो. एंड आई ट्राइड अ बाइट. काफ़ी फ्रेश था, काफ़ी अच्छा था. और अगर आप कोई हेल्दियर ऑल्टरनेटिव में जा रहे हैं और फिलिंग आपको एकदम चाहिए, एक ही डिश आपको खानी है, तो सैमन इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली गो फॉर. उसके बाद हमने ट्राई किया था चिकन नगेट्स. 200 रुपये के थे और काफ़ी अच्छे थे, बेटर देन मैकडोनल्ड्स. एंड जो पोटैटो वेजेस थे, दे वर नॉट बैड. हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद पोटैटो वेजेस. और जो दाल मखनी थी, चावल के साथ आती है, राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ, वेरी बैड राइस. एंड द दाल मखनी वॉज एक्चुअली नाइस, डिसेंट. सो अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो मीट बॉल्स वर 10 on 10. Salmon was 10 on 10 as well. Chicken nuggets 9 on 10. Wedges 8 on 10. Dal makhni by itself 8 on 10. With the rice, no rating because the rice was really that bad. ओवरऑल 1630 रुपये लगे. सैमन की ऑलमोस्ट 700-800 रुपये का था. तो अगर वो हटा दीजिए तो काफ़ी रीजनेबल है इधर खाना खाना. और अब आपको दिखाते हैं फाइनल हमारा चेकआउट एक्सपीरियंस कैसे रहता है यार. ऑलराइट, चलिए चलते हैं.